वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है गोखू सुपर ने और यशवंत चंद्रयान ने, है ना, चंद्रयान। वेल वीडियो का टाइटल है हाउ दिस बॉर्डर ट्रांसफॉर्म्ड अ सबकॉन्टिनेंट इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। वाओ, This is the Golden Temple. People come here from all over the world to bathe in its waters, to look at the holy book that is inside of this middle Golden Temple, and to just experience the holiness of this place. This place is the epicenter of Sikhism. It sits right here in northern India, in a city called Amritsar. Close by, there's another important Sikh site called Kartarpur. It was established by the founder of Sikhism 500 years ago. It's the place where he spent the last years of his life, and it is the second holiest place in Sikhism. For centuries, Sikhs have been able to make pilgrimage between these two sites, to move freely throughout their heartland. But in 1947, a British lawyer drew a border here, turning what had been British India into two new countries, India and Pakistan. I can only call it the most sort of bizarre lines which were ever drawn across a map. It went right here, with the Golden Temple on one side and Kartarpur on the other. Thanks to this border, Sikhs in India are now cut off from their holy site. So many come here, to a platform that the Border Patrol set up. The platform looks across the border, where with the help of telescopes, Sikhs can look at their holy place, just 3 or 4 kilometers away. In addition to cutting off communities from their sacred sites, this border separated families, cut across rivers, forests, farms, railroad tracks. Today, this border is heavily fortified, with nearly all 3,000 plus kilometers fenced. It's lit so well that you can see it from space. And barely anything or anyone crosses over it. When we talk about the drawing of the line, what was the most painful was the division of families which took place. And that is a very big reality. This is the story of a violent separation, one of the most traumatic events of the 20th century. It's the story of how a hastily drawn line on a map separated one people into two. This is a horror story. What we saw was a town soaked with the stench of death. In the trail of murder and arson come the refugees. Their suffering is the new tragedy of India. Many will never reach their new land. These are the things that are setting the hearts burning on either side of the line. The sun is setting and I'm walking along one of the oldest roads in Asia, one that used to connect this region. But today, a border runs through it. And instead of connection and trade, what you see here is this. There's barbed wire, there's fences, there are officers everywhere, and yet there's also ice cream and popcorn and paraphernalia. This feels like a sporting event. You can buy keychains of machine guns. Thousands of spectators file in, filling this stadium that looks down on the border. On the other side, Pakistanis are doing the same. Then, both sides start their different show.
2 hours of chanting and dancing. ये वाले डांस की बात कर रहे हैं। Then the finale, a face-off between the two sides. They strut back and forth in this coordinated choreography. And it all ends with the lowering of each flag and the closing of this gate. This bizarre border show plays out every evening. But this ceremony, this fence, this intense nationalism, if you rewind just a little in time, none of this existed. The British controlled parts of India for nearly 200 years, but by 1947, a strong movement of independence was swelling across the subcontinent. While back in Britain, the country was in massive debt after fighting World War II and didn't have the resources to hold on to their colony. So they started making plans to leave India. British officials thought that a proper transfer of power would probably take around 5 years. But when the British leader in charge arrived in early 1947, he hastily decided to shrink their exit timeline. And so what needed 5 years would now need to be done in just 4 months. British India was to be split into 2 independent nations, a mostly Muslim Pakistan and a Hindu majority but officially secular India. To do the actual drawing of the border, the British brought in a lawyer from London. He arrived the month before the British were supposed to leave India. He hadn't been to British India before and didn't know much about the region. He had no idea about India, no idea about Indian geography, no idea about Indian politics. And yet he was the one drawing the lines on the map that would affect millions of lives. During his visit, this British lawyer looked at maps and census data, focusing on the maps that showed religious identity of people in India. India has a wide variety of religions, and based on these census maps, you can see that people of all religions lived amongst each other all over the region. So to draw the line, the British lawyer looked at individual districts, putting any district that had a Muslim majority population into the new country of Pakistan, while Hindu and Sikh majority districts would be kept within India. Based on this method, the lawyer began to see what a border might look like. He only had 5 weeks to do this. He later wrote that it would have taken years to settle on a proper boundary. And that's because this method of drawing the line conceals that within these districts, there were sizable communities of all religions that had been living side by side for centuries, all throughout India. August 15th, 1947, Independence Day for India and Pakistan, but Gandhi is not present. Why the celebration? The British lawyer left that day. He would never return to India again. 2 days after independence, the borders were made public, prompting more than 14 million people to leave their homes, their lives, for what was now their side of the border. We were told that you have to cross the border, India. Hindus and Sikhs from Pakistan moved into India, and many Muslims in India moved into the new Pakistan. These were people who were indeed forced to lose their entire homes, their memories, their childhood, and the things they saw. It was one of the largest forced migrations of people ever, and it was chaos. A chaos that led to widespread, unspeakable violence. Cities on fire, sexual violence against women, trains full of dead bodies. The survivors I talked to were just children when all of this happened. The division of the subcontinent became known as the Partition of India, a phrase synonymous with trauma, fueled by the reckless mismanagement of an imperial power.
I'm in a small village right near the border on the Indian side that used to be a Muslim community before partition. And in the middle of town is this shrine where residents would conduct ornate Muslim burial practices on these graves. If you look at the original maps that the British drew up when they were trying to draw this line, this town was actually in Pakistan in most of the maps. But in the end, the British lawyer decided to draw the line here. The people here discovered that they were now a part of the new country of India, and so many of them fled just across the border to the new state of Pakistan, and they left this place empty. But just as Muslims were leaving this village for the new Pakistan, Hindus and Sikhs from Pakistan were coming across into India, and some ended up here. The Hindus and Sikhs that now live in this community have taken it upon themselves to continue the Muslim traditions that this community was based off of. They continue to maintain these graves and these symbols, even though they don't necessarily pertain to their own religion. बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है, कमेटी भी बनी हुई है। दूसरा ना, लोगों की हर कम्युनिटी की इसमें श्रद्धा है, श्रद्धा के तौर पर जितनी इसकी संभाल होती है ना, कमी नहीं आती। This is a sign of respect, of common identity in spite of the border. But this is just one side of the story. The subcontinent echoes and shudders to the sounds of a full-scale, undeclared war. Within just a few months of drawing this border, India and Pakistan were fighting an all-out war. One that centered on this region in the north, which both sides claimed as their own. The new countries would fight several more wars over the years. A border fence would eventually fortify the majority of this boundary, and both countries would acquire nuclear weapons, turning up the tensions and deepening the division. But if you take away the geopolitical bluster, the nukes, the barrier, the trauma of partition, you can still see how much these two countries have in common. I'm at a school in Delhi. Students are Skyping with a school in Pakistan. अच्छा हिंदुस्तान जो है वो पार्टीशन से पहले ना हम और इंडियन साथ मिलकर रहते थे। जलेबी फाफड़ा मिलता है। मेरा पेट भर के खिलाऊंगा। अच्छा आपको क्रिकेट में कौन-कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। These kids are speaking a similar language, and it takes them just minutes to dive into the common roots of their culture. पनीर है। This shared identity that these kids are feeling isn't uncommon in India or Pakistan. Same language, same taste, same food. Whereas Hindus and Muslims and Sikhs used to live together, attend each other's social functions, marriages, everything. Why this divide now? If you stand in the walled city in Amritsar and you stand in the walled city in Lahore, believe me, the smells, which is a kind of giveaway, are the same. I'm visiting a group of Sikhs coming off the train. They were able to get a visa to go visit this religious site that most have to see through a telescope. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਸੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। So with all these cultural similarities, all these happy faces, shared interests, how do you explain this? You see, it is the politician
who poisons people's minds. कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं. The divide is created, nurtured, fostered because it suits a certain politics. Over the years, politicians on both sides have exploited tension with the other side to stoke feelings of nationalism. और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे. दोनों देशों में नफरत का कारण है मेरे लीडर, चाहे वो पाकिस्तान के लीडर हो या हिंदुस्तान के लीडर हो, ये शांति नहीं चाहते. Back here at this viewing platform, there's construction vehicles everywhere. For years, the Sikhs have lobbied for easier access to their holy site. And after years, the two governments finally agreed to build a little notch into this border. A corridor that will allow Sikhs to freely access their site without a visa. These 4 kilometers will restore a small part of what was once the Sikh heartland. But for millions of Indians and Pakistanis who continue to live with the repercussions of the traumatic events of 1947, this fortified and volatile border remains unchanged. If anything, it's getting thicker. 70 years later, the shadow of partition continues to divide families, halt trade, cut connections, stop cooperation, instill fear, promote hatred. And the people who live in its shadow, on both sides, old and young, continue to live with this division that's superimposed upon their history of deep connection. बात करें अगर आज की वीडियो की, तो इससे पहले भी हमने पार्टीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी हैं, लेकिन अगर इस वीडियो की बात करें ना, तो इसने जो भी सिनेरियो है वो एक बहुत डिफरेंट वे और डिफरेंट एंगल से दिखाया है. बिल्कुल, मैं भी एग्री करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्यों मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि वो टाइम जब लोग नहीं चाहते थे अपने घरों को छोड़ना, अपनी ज़मीन को छोड़ना, लेकिन उसके बावजूद उनको फोर्सफुली वो जगह छोड़नी पड़ी, अपने घर छोड़ने पड़े. तो मतलब आज भी जब हम वो क्लिप्स देखते हैं या सोचते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं. मैं ये चीज़ सोचती हूँ, छोटी सी एक चीज़ सोचती हूँ कि हम लोग अभी आकर मतलब ये बात करते हैं, मतलब कभी शायद हम लोग इतना रियलाइज भी नहीं होता होगा कि उस टाइम पर क्या हो गया, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों को ख्याल भी नहीं है किसी चीज़ का. बट मैं ये बात बोलती हूँ कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हम लोग किसी के घर में अगर रात गुजारनी हो तो हम कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं. हम कहते हैं हम जल्दी से अपने घर आए, हमें अपना बेड मिलना चाहिए, हम उसमें बड़े हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते. बट जैसे ही मतलब अगर हम लोग पार्टीशन दूसरी साइड पर अगर इससे रिलेट करें तो हम लोगों को ये रियलाइज होगा कि ये तकलीफ कुछ तकलीफ नहीं है जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं, और असल में वो तकलीफ सही तकलीफ थी 1947 में, जो कि लोगों की मर्जी के बगैर उनकी किस्मत का हम कहेंगे कि डिसीजन ले लिया गया जब वो नहीं चाहते थे, लेकिन आपने अपनी मर्जी से उनका डिसीजन कर दिया. देखिए वीडियो जैसे हमने देखी, वीडियो में जो एक माजी थी जो कि पार्टीशन में जो यहाँ से वहाँ चली गई, तो वो बता रहे थे कि हम एक गिलास भी नहीं लेके आए, सब कुछ अपना वहाँ पर छोड़ आए. तो वाकई में ये चीज़ें जो है ना बहुत दुख देने वाली और अंदर से कुरेदने वाली चीज़ें हैं. कत्ल हुए, फिर उसके बाद औरतों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई, बच्चों के साथ, मतलब ये कोई छोटी सी बात नहीं है. और पता है मैं तो वाकई में मैं जब ये वीडियो देख रही थी मेरे लिए ये शॉकिंग था कि एक ऐसे बंदे ने डिवीजन की जिसको कुछ पता ही नहीं था. और पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को रेड क्लिफ बॉर्डर कहा जाता है. और मैं ये बात बोलती हूँ कि ये ऐसी वाकई में फिर ये तो एक ऐसी सियासत थी जो कि बेशक ब्रिटिशर्स उनसे यहाँ से चले गए 200 इयर्स रूल करने के बाद, लेकिन उनका एजेंडा तो फिर यही रहा होगा कि भाई आने वाले सालों में या मतलब जब तक ये कंट्रीज रहते हैं इन लोगों के आपस में इख्तिलाफात खत्म ही ना हो. बिल्कुल, वो पहले भी यानी कि जब वहां से यहाँ पर आए, इस कॉन्टिनेंट में आए, तो तब भी उनका एक ही एजेंडा था डिवाइड एंड रूल का. और अगर अब भी देखा जाए जब वो यहाँ से चले गए तो उनका वही एजेंडा है डिवाइड एंड रूल का. अगर देखा जाए तो इस टाइम भी जो है पूरी दुनिया पर अंग्रेज ही छाए हुए हैं,
उन्हीं की पॉलिसीज चलती हैं, वही हुकूमत करते हैं, और फिर भी हम लोगों को जो है वो समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। मौसम, मैं एक बात बोलूँ, मुझे ना इस चीज़ से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है कि भाई कि उनकी पॉलिसीज क्यों चलती हैं, वो रूल क्यों करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, उनको भाई उनका फल मिल जाता है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये बात बोलती हूँ, अगर आपके खुद का घर मजबूत हो, अगर खुद घर की नींव मजबूत होगी, भाई कोई भी आकर आपको नहीं हिला सकता। हमारे सब कॉन्टिनेंट की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे अपने लोग, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते थे, वो अगर 200 साल इकट्ठे रह पाए, उससे पहले भी इकट्ठे रहते थे, ठीक है, कि उनमें ये भावना नहीं थी कि हम लोगों को अलग-अलग कंट्रीज चाहिए। फिर सडनली ऐसा क्या हो गया भाई कि इन सबको अलग-अलग कंट्रीज चाहिए? बिल्कुल। हम अगर प्री पार्टीशन जो है, जो मूवीज बनती हैं, जो क्या नाम लेते हैं, प्री पार्टीशन हीरोज हैं, उन पे मूवी बनती है, तो अगर हम उन्हें देखें तो उनका हमेशा एक ही एजेंडा रहा था कि जो है वो आज़ादी, ठीक है, सिर्फ आज़ादी, ठीक है ना, मिलकर आज़ादी। लेकिन क्या ऐसा, यानी कि अंग्रेज़ों ने ऐसी क्या चीज़ बोली कि जो कौमें, जो लोग इतने अरसे से एक साथ रह रही थी, वो लदा कर दिया। सच में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट्री बनी है और इसमें बहुत क्लियरली चीज़ें बताई गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे बच्चों को पढ़नी चाहिए, उनको ये चीज़ें, क्योंकि ये मौसम, आप जब ये ऐसी चीज़ें देखते हो आपको क्लियरली समझ में आती हैं कि हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या रहा होगा, उस टाइम के लोगों की क्या सोच रही होगी। उसके बावजूद भी अगर हम आपस में लड़े झगड़े तो मेरे ख्याल में फिर हम जैसे लोगों का कुछ नहीं बन सकता। बिल्कुल। यहाँ पे ये चीज़ भी जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी कहा, और जो है जो वीडियो मेकर है उन्होंने भी कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो अपनी सियासत के लिए जहर टाइम टू टाइम घोलते रहते हैं। अच्छा, वैसे पता है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है बड़े न्यूट्रल होकर उन्होंने, मुझे ऐसा लगा बनाना, उन्होंने दोनों पक्ष, उन्होंने ये नहीं कि कोई एक साइड ली है। आम लोग क्या चाहते हैं वो हम हमेशा आपसे ये बात बोलते हैं, इवन कि मैं मौसम को अक्सर बात बोलती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं, तो हम लोग कभी भी जब गुरुद्वारों में जाते हैं तो मैं मौसम को ये बोलती हूँ, इवन कि अपने घर वालों के साथ, कि एक आपको डिफरेंट सी फील आती है जब आप, क्यों? क्योंकि हमारी रूट्स सेम रही हैं, क्यों हमारी रूट्स अभी भी सेम है, और हमें ये एक्नॉलेज करना है। और जब सीरियसली मैंने वो देखा कि जब एक मतलब इंडिया में जो सिख जितने थे, वो जो मज़ार हैं वहाँ पर बने हुए और कब्रें हैं, वो उनकी इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, तो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरे दिल में ना बहुत एक मैं कहती हूँ कि एक ऐसी फीलिंग्स आई कि मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, और जिन जगहों का यहाँ पर ख्याल नहीं गया उनके लिए मेरे मन से ऐसे सॉरी भी निकलती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है ना, जो प्रैक्टिकली, कि जो ये चीज़ बताती है कि हमें एक दूसरे के रिलीजन की, एक दूसरों के फेथ की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट्स जो हैं, इंडिया की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, करतारपुर राहदारी पर, कॉरिडोर पर की अगर बात करें, उस पर आके अपने इशू सॉल्व कर सकती है, वो बना सकती है, तो दोनों गवर्नमेंट्स मिल बैठकर कुछ भी कर सकती हैं। और मौसम, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों ने पुराना, मतलब हम लोगों ने करतारपुर साहब जो था वो देखा था जब वो नहीं बना था, और लोग जो से ऐसे देखते थे, और फिर हम लोगों ने नया वाला भी देखा। मैं कहूँगी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने पुराना वाला करतारपुर साहब भी देखा और नया वाला भी देखा, क्योंकि आपको चीज़ें आपके लिए मेमोरीज बन जाती हैं। तो एक चीज़ मैं सच में ये बोलूँगी कि ये जो राहदारी बनी है, ये जो कॉरिडोर बना है, मैं कहूँगी अब मतलब ठीक है, इसके मुझे नहीं पता कोई ड्रॉबैक्स हैं या नहीं है, लेकिन ये लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, और जब वो हम वहाँ से वापस आते हैं और जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ से वापस जाते हैं, तो वो जब वहाँ पे जाके एक दूसरे को बताते हैं ना, हम वहाँ पे गए, बहुत वो प्यार से मिले, हम बहुत प्यार से मिले, तो आप लोगों को प्यार मोहब्बत और बढ़ती है। बिल्कुल, बीच में अम्मा जी बोल रही थी कि सारी उम्र हमारी गुजर गई, अब आकर हम लोग, हालांकि वो पुराने वाले करतारपुर साहब की बात कर रहे थे क्योंकि वो वीडियो पुरानी है, तो मैं ये बात बोलती हूँ कि देखो अभी तो इजी एक्सेस हो गया कि लोग आ जा
सकते हैं, तो लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है कि आप अपनी सीक्रेट प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैप को दिखाया गया और डिवीजन हुई और आपकी सीक्रेट प्लेसेस को डिवाइड कर दिया गया, मैं कहूँगी इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है हम लोगों के साथ। फिर उसके बाद मौसम में एक और चीज़ बोलूँगी कि करतारपुर साहब की हम बात करते हैं, यहाँ पर जब हम लोगों ने भी विजिट किया था और हम लोग भी काफ़ी सारे सिख फैमिली से मिले थे, हिंदू फैमिली से मिले थे जो वहाँ पर आए थे। और तो मुझे एक हिंदू फैमिली याद आ गई जो मुंबई से थे, याद है? वो लोग मुंबई से आए थे और हम लोग ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर आए, आपको क्या डिफरेंट लगा? तो उन्होंने बोला कि मतलब मुंबई में लाइफ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ है, लोग इतना ज़्यादा पूछते नहीं है किसी को, बट हमें यहाँ पर इतना अच्छा लगा, लोग हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवा रहे हैं। तो मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यहाँ से लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो लोग भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाएंगे। तो मुझे ये प्यार, ये अपनापन, ये जो एक दूसरे को आप स्पेशल फील करवाने वाली वाइब्स आती हैं, मुझे बेस्ट लगती हैं और यही बताती हैं कि हम लोग कितना प्यार करते हैं, चाहे हमारे जितने मर्जी खिलाफात हैं, हमें गुस्सा हो, कुछ भी हो, बट मुझे लगता है दिल से हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एनीवे, ओवरऑल ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ दे हमें हमारी वीडियो चैनल करें, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।